just two questions. The app is showing me majority of the students got it wrong. So let me discuss it. First one, Mr. Fat walked 15 meters towards north. Then he moves 11 meters south. From there, he walked 3 kilometers west. ये 3 किलोमीटर नहीं होना चाहिए था, ये 3 मीटर ही होना चाहिए था, सॉरी. या फिर ऊपर भी किलोमीटर होना चाहिए. Everything should be in kilometer or everything should be in the meter. So that's a mistake. But anyway, बता देता हूँ. तो ये मीटर इधर आएगा. ओरिजिनल क्वेश्चन में मालूम नहीं है मेरे को, because I have typed this question. So by typing also I might have made mistake. मालूम नहीं. But if it is, say here it is 15 meter. It is 11 meters. It should be 3 meters. Okay, east. How far is from the original position? You know the directions. I hope you remember the directions. On the top, what I should write? Top. One or two of you north. So N I'm writing. Opposite to this means down. I'll write south. Or let me take this side. So one question on this side and one question on this is north. This is south. I'll erase this N and S. Both the answers I'll keep it on the screen. Okay, at a time. Then east is on this side. This is west. You should not have any doubt here, right? Yeah, 5 is the answer, correct. No. Yes, okay, yes, you are writing. 5 is the answer. I'll come to that. Now, what is saying? Mr. Fat walked 15 kilometers towards north. So, 15 kilometers north. Sorry, 15 meters north. 15 meters. Agree? Now, what he's doing is, then he moves 11 meters south. 11 meters south. किधर गया था? नॉर्थ में गया था. Now ये साउथ में आएगा. So right now where he is at the arrow point. Is here. Right at this point, green arrow, green point I'm showing. So from there, move 11 towards south. दिख रहा आपको? यहाँ पे आ गए साउथ की तरफ, इधर आ गए, इस पॉइंट पे आ गए. ये कितना आ गया डाउन? 11. So what is this area? This distance? He went 15 up, 11 he came down. So that difference? 15 north में गया, 11 south में आ गया, तो 4. So let me write here 4. This is 4. Now what he does after that? From there he walks 3 kilometers. Sorry, 3 kilometers नहीं, 3 meters. East की तरफ गया. कितना गया? 3. So he is at this point. Okay. What is saying? How far is from the original position where he was originally? Originally he was here. So how far he is? So यहाँ से yes. Math students, easy or not easy? Right angle triangle बन गया. Pythagoras. Yes. To use Pythagoras. Triplet of Pythagoras. Hypotenuse square. Answer is 5. Right? Hypotenuse square. That is what we want. That distance. Question mark square is equal to 4 square plus 3 square. Question mark square. So that is 16 plus 9. That is 25. A square है. Take a root on either side.
question mark is equal to 5. Taking root. Answer is 5. Many of you got wrong. Why? I don't know. Okay. My app on the professor side showed me yesterday majority of the student got wrong. This question got wrong. Okay. The next one. Second question. Now, any doubt? The total 4 questions it was showing me. That is, I should discuss with you. So I'll be discussing today 2. Tomorrow I'll be discussing 2. P, Q, R, S are playing a game of carom. PR and SQ are the partners. PR are the partner, SQ are the partner. S is to the right of R, who is facing west. Let me write the direction again. This is north as usual. This is your west. This is your south. And this is your east. And let's say this is carom board. Okay, this is carom. This is carom. Okay. Now, whose direction is given? R is facing west. R who is facing west. So R comes on this side because he has to face west. Right? R is facing, he's playing carom, so his face will be on this side. So he's facing west. What is another information given? S is to the right. This is R. Which side is on the right? This side is right side for R, and this is the left. R का partner कौन है? P है. So P will be sitting here. P will be facing to east. Now what is said? S is on the right of R. So S किधर जाएगा? किधर जाएगा? Where S is facing? S is facing towards south. And last में आ गया तुम्हारा S का partner कौन? Q. Q is sitting on the south side, but is facing on which side? Is facing towards the north. Then Q is facing. Yes, I know. In the app, this answer is given wrong. They are saying Q is on the south, which is wrong. Okay, but if you got it north, you are correct. Then Q is facing north is the answer. Any doubt in this too? Any doubt in this too? Okay. Yes, few of you asked me yesterday. Okay, you have sent me questions saying that sir, we want answer, and I provided answer of them. But 4, this. Okay. Any screenshot or anything you want to take? It was easy. I don't know. एक क्वेश्चन किधर है मींस कल के एग्जाम में था yesterday's exam. These questions are taken from yesterday's exam. दिया नहीं क्या? What do you want to ask? So then what do you want to ask? From where I took these questions? Who is facing? What is saying? S is to the right. S is to the right of R. Who is? S is. इधर क्या बोला है? सेंटेंस देखो ना, इंग्लिश देखो रे. इंग्लिश में क्या गड़बड़ कर रहे हो आप लोग? इंग्लिश का सेंटेंस इधर से. S is to the right of R. Who is facing west? What do you want to say? S is facing west. R के लिए है वो. R who is facing. R who is facing west. वही किया मैंने. R is facing west. Okay. वही किया मैंने. तो देखो R मेरे डायग्राम में R है. R is sitting on the east but is facing on west. चले.
मैंने नोट्स में नहीं भेजा ये ऐप. We are having all the professors, we are having this app. An app tells us, app ने मेरे को बताया कि there are 4 questions where majority of the students got wrong answers. Out of the 4, these are the 2. इसके बाद एक वो विंडो वाला क्वेश्चन है, वो भी बहुत सारे इनका गलत गया. विंडो, there are 6 windows, 6 products. Okay, and I don't remember one more question it showed me, that is majority of the students got it wrong. किसका wrong है वो नहीं बताता है. It shows me majority of them got wrong. अभी majority मतलब आप अगर 20 जन एग्जाम देते हैं तो 10 से ज्यादा जन का रॉन्ग जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज मेजॉरिटी. So it depends on how many people are giving the exam. 50% से ज्यादा लोगों ने, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया उन लोगों ने गलत आंसर दे दिया. ऐसा ऐप बता रहा था मेरे को, इसलिए मैं 2 डिस्कस किया. एनी डाउट नाउ? और 2 कल डिस्कस करेंगे. वो क्वेश्चन मेरे को कॉपी करना पड़ेगा. आज टाइम नहीं मिला मेरे को, मैंने क्वेश्चंस कॉपी नहीं किए. 2 किए कॉपी किया, टाइप किया, जो भी है. ओके, यस, डेफिनेटली देयर मे बी मिस्टेक्स इन द ऐप, बिकॉज़ ऐप से ही क्वेश्चंस आते हैं. एंड व्हेन वी सेट द पेपर, इट इज नॉट शोइंग अस द आंसर. हमको आंसर नहीं बताता है, वो सिर्फ क्वेश्चन बताता है. आई पिक्ड अप क्वेश्चंस. नाउ आई केम टू नो कैरम वाला आंसर वाज रॉन्ग, दैट फैट वाला आंसर इज राइट. ओके, नेक्स्ट बंद कर देता हूं मैं. सीक्वेंस एंड सीरीज में से ये वाला, इसके पहले वाला ये हो गया था. एग्रीड, 23rd हो गया था. आई डू रिमेंबर एड्रियन ने मेरे को डाउट भी पूछा था. The sum of natural numbers between 500 to 1000 which are divisible by 13 is done, right? The next, एक फिफ्थ क्वेश्चन बाकी है अपना. यस, वो फिफ्थ अपन ट्रायल एंड एरर से करेंगे तो फास्ट हो जाएगा. करेंगे वो. लेट अस फिनिश ऑफ दिस. नेक्स्ट चलो. If unity is added to the sum of any number of terms of AP 3, 5, 7, 9, the resulting sum is. देखो इन लोगों ने इधर क्या दिया हमको, सॉरी, आ गया क्या आंसर? आ गया आपको? इतने में आंसर आना भी चाहिए था. इफ यूनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इफ यूनिटी? यूनिटी का मतलब जानते हैं? यूनिटी मींस 1. नहीं मालूम होगा तो याद रखो, यूनिटी मींस 1 is added to the sum of any number of terms. कितने terms को? Any number of terms, any number of terms of the series 3, 5, 7, 9. Let us take any number बोला है तो let us take 3 only. First 3. They are in AP. What is the total of this? Total of the 3. 3 plus 5 plus 7. कितना आ गया? 15. Any number of terms. मैंने 3 term लिया है. Add unity to this. Add unity. Unity means plus 1. कितना मिला तुमको? 16. Okay. Let's take another. Now this time let us take 4 terms. All 4 terms. Any number of terms बोला है. 3, 5, 7 and 9. 7 तक का टोटल तो कितना था? 16 था. Sorry, 15 था ये. Plus 9. 15 plus 9. This 3 plus 5 plus 7 plus 9 is equal to कितना हो रहा है? 15 and 9, 24. Add 1 to it. Unity means 1. यूनिटी ऐड किया मैंने.
नाउ कम टू दैट कंक्लूजन, क्या हो जाएगा? विच ऑप्शन? इधर आंसर 16 आया, इधर आंसर 25 आ गया. अ परफेक्ट स्क्वायर. दिस इज द आंसर. बी इज द आंसर. हो गया? चले नेक्स्ट. 25. A sum of all natural numbers 100 to 300 which are exactly divisible by 4 or 5. Divisible by 4 and नहीं बोला है और बोला है. Be careful here. The word is or. तो क्या करना पड़ेगा पहले? We'll have to find out series where divisible by 4. Divisible by 4 वाली series. जाएगा कहां से शुरू हो जाएगा? Is 100 divisible by 4? Is 100 divisible by 4? Yes, तो सीरीज चलो हो जाएगी 100 से. Divisible by 4 means next number क्या आएगा? Divisible by 4 means D is 4. So 104, 108, so on. What will be the last number? Is 300 divisible by 4? 300 divisible by 4? Answer is yes, up to 300. Let us find out n here. n कितना आएगा? याद है n के लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया था. n is equal to the last term, that is 300, minus the first term 100 divided by d. d is 4 plus 1. That is equal to कितना आएगा? 200. 200 divided by, sorry, 300 divided minus 100, 200. 200 divided by 4, 50. 50 plus 1, 51. Agreed? n कितना आ गया? 51. Now let us find out Sn. S51. Sum till 51 is equal to, याद है क्या फॉर्मूला? AP में n upon 2 in bracket. We know the first term, we know the last term, so I'll use this formula. A plus L. 51 divided by 2. That divided by 2 ही रहने देना. A plus L. A is 100 and L is 300. 100 plus 300 is 400. Divided by 2. 2 ones are 2. 2 twos are 4. So 4, 200. 51 multiplied by 51 multiplied by 400. 20,400. क्या ये आंसर हो गया अपना? $20,400 हो जाएगा ना? गलत किया क्या मैंने कुछ? $51 multiplied by 200. Yes, 10. Sorry, 10,200. Sorry. $10,200. क्या आंसर हो गया? Is it the answer? No. ये क्या हो गया? Divisible by 4 वाला हो गया. Now divisible by 5. Similarly. Divisible by 5. Divisible by 4 और 5. ऐसे 4 वाला हो गया. अभी divisible by 5. क्या सीरीज आएगा इसका? इसका सीरीज आएगा डिविजिबल बाय 5 वाले का. 100 से शुरू हो जाएगा. 105, 110 अप टू 300. इसका n ढूंढ लेते हैं. n इज इक्वल टू क्या आएगा? 300
minus 100 divided by 5 plus 1 कितना हो जाएगा? 200 divided by 41, 200 divided by 5 plus 1, 41. yes. इसका सम ढूंढ लेते हैं. S41 is equal to n upon 2 a plus l. कोई फॉर्मूला खाली अभी कितना है? 41 divided by 2 in bracket 100 plus 300. वापिस क्या आ जाएगा आपका इधर से? 41 into 200. 41 into 200. 8200. अब क्या करोगे आगे? एक आंसर आ गया 10,800. ये वाला आंसर आ गया तुम्हारा 8,200. और क्या करोगे? गुड. नाउ in this series we will have certain number which are common like 100. इधर भी आ गया, पहले सीरीज में भी आ गया 100, और 100 दूसरे सीरीज में भी आ गया. कोई कोई नंबर दो बार ऐड हो गए. सब नंबर्स आर एडेड ट्वाइस. कैसे देखो, अभी पहले वाले सीरीज में जैसे 100 आया था, इधर 100 भी है. एक दूसरा नंबर जो दिख रहा है सामने सामने और भी नंबर हो गया. ऐसा नहीं बोल रहा कितने नंबर है. वो 300 है, इधर 300 है. सम नंबर्स आर एडेड ट्वाइस. ये कौन से नंबर होंगे? विच आर डिविजिबल बाय 20. तो अभी और एक करना पड़ेगा, डिविजिबल बाय 20. इधर करता हूं मैं, डिविजिबल बाय 20. डी लिखता हूं, डी बाय 20. ये सीरीज भी किधर से चालू हो जाएगा? 100 से शुरू हो जाएगा. डिविजिबल बाय 20 है तो 120 so on up to 300. इसका n कितना हो जाएगा? n is equal to 300 minus 100. 300 minus 100 divided by 20 plus 1. कितना हो रहा है रे? प्लस 1 है इधर. 200 divided by 20. 200 divided by 20 plus 1. 11. इसका सम करेंगे S11. डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूं. 11 divided by 2 in bracket 100 plus 300, that is 400. कितना आंसर आ रहा है इसका? 2200. एंड फाइनली क्या करना पड़ेगा? फाइनल कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना. फाइनली 10,000 फर्स्ट टोटल. कितना आ गया फर्स्ट टोटल? 10,200 प्लस 8,200 सेकेंड टोटल माइनस 2,200. करो और आंसर कितना आ रहा है? सो डिविजिबल बाय 4 और 5 है. एंड होता तो इजी हो जाता था. और है मगजमारी है. 3 करना पड़ेगा. डिविजिबल बाय 4 करना पड़ेगा. डिविजिबल बाय 5 करना पड़ेगा. 4 into 5 20. डिविजिबल बाय 20 भी करना पड़ेगा. 3 टोटल लिए. 4 and 5 वाले को ऐड किया, 20 वाले को माइनस किया. कितना आंसर आ रहा है? 16,200.